Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss the indicators of acids and bases. And we have discussed actually litmus solution and litmus papers. Right? Now proceed on. Take 1 milliliter of any acid and put it into a watch glass and then place a red litmus paper in it. There is no change. In the same setup, place a blue litmus paper and see what happens. The litmus paper will turn red, indicating the presence of acid. So blue litmus paper turns into red. That means acid turns blue litmus red. That is the indicator for acids. This shows that acids turn blue litmus red. Apart from natural indicators, there are a few synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein. The neutral color of methyl orange is orange and it turns red in an acid and yellow in a base. So very interesting indicator of acid is methyl orange. मिथाइल ऑरेंज को आपने जैसे ही एक ड्रॉप दो ड्रॉप किसी आपको पता नहीं है कि बेसिकली सपोज करो ये हमें पता नहीं है कि ये क्या है, कोई केमिकल है, ये सपोज करो एसिड नहीं है, आपको नहीं पता, ये भी बेस नहीं, आपको नहीं पता. अगर एसिड हुआ, हमने कहा कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल है, आपको चेक करना है वेदर इट इज़ एसिड और बेस. आपके पास आपको पता है कि एक इंडिकेटर होता है, उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज के 2 ड्रॉप आपने हल्का सा थोड़ा सा इसको केमिकल ले लिया और आपने यहाँ पे 2 ड्रॉप डाला, और अगर ये कैसा कन्वर्ट हो गया, एग्जैक्टली आपने कलर देखा. अगर रेडिश हो गया तो क्या बोल देंगे कि वो एसिड है, अगर येलोइश हो जाएगा तो क्या बोल देंगे वो बेस है. राइट. तो ये हम इसको देख कर बता सकते हैं. फिनॉफ्थलीन के लिए देखें, Phenolphthalein is colorless. It does not change in an acid but एसिड में कोई turns इफेक्ट pink नहीं, in a base. लेकिन बेस में वो पिंक कलर दे देगा. Acids have various uses. Sulfuric acid is used in the manufacture of fertilizers, paints, dyes, chemicals, plastics, and synthetic fibers. It is also used in car batteries. Nitric सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप, H2SO4. कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यानी कि सल्फेट के पास चार्ज कितना होता है, 2 माइनस चार्ज. राइट. तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 H प्लस लगाए ना, तो 2 H प्लस लगाए तो क्या फॉर्मूला बन गया, H2SO4. राइट. acid is used in the manufacture of fertilizers, नाइट्रिक एसिड HNO3, explosives like TNT, dyes and drugs. Hydrochloric acid is used जिसे आपने TNT बोला कि HNO3 का इस्तेमाल हम करते हैं. TNT एक तरह का एक्सप्लोजिव होता है. राइट. तो TNT क्या मतलब हुआ, TNT का सिंपली मतलब होता है TNT. तो जनरली टर्म होता है ट्राई नाइट्रो टोलुइन. आप जरा समझे टोलुइन को है, ट्राई नाइट्रो यानी कि 3 नाइट्रो लगे हैं टोलुइन में. टोलुइन क्या होता है, जरा पहले समझ लें टोलुइन क्या होता है. तो टोलुइन बेसिकली ये होता है, दिस इज द कार्बन चेन. एंड हाउ मेनी कार्बन चेन इज दैट, C 6 carbon chain are here. See, and alternate double bond. Every carbon has single hydrogen, that is the benzene actually, right? Every carbon has hydrogen. If one hydrogen is replaced by this hydrogen replaced by CH3, suppose this hydrogen is replaced by CH3, and now the formula becomes like this, CH3, is it? Then this is called toluene. Now toluene, this is the toluene. टॉलुइन कैसे समझे कि बेंजीन में, दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर, यू नो, दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर एंड दिस हैज CH3 ग्रुप like this, and 3 positions having nitro group, 3 carbon is connected with nitro group, and now this is called trinitrotoluene. This is toluene, and this toluene is bonded with 3 nitro groups, that is why it is called trinitrotoluene, and it is a very डेंजरस एक्सप्लोजिव. राइट. एक बॉम्ब के जैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, एक केमिकल फॉर्म है. राइट. आगे देखेंगे. or galvanizing to remove oxide film from steel and also as a descaling agent for boilers. It is also used in the textile, leather and food industry. What's the matter, Sam? You look pale. Is something wrong? I have overeaten.
and now I am feeling some uneasiness in my stomach. What should I do? This problem is known as acidity, Acidity. which is due to excessive intake of spicy food. This acidity of food is relieved by using an antacid, which is a mild base like sodium bicarbonate. A mild base neutralizes the excess acid produced in the stomach and makes you feel relieved. In this lesson, To what are the antacids? Antacids are basically used for when the people suffer from acidity. And why is it acidity? Acidity means, देखें, आपके स्टमक में जब आपके पास आपके पेट में सफिशिएंट अमाउंट का जब कोई भी फूड रहता है, तब तो क्या होता है, देखो स्टमक जब हम बात करते हैं तो बेसिकली स्टमक ऐसा होता है आपका, देखें, राइट। स्टमक जब भी हम बात करते हैं तो याद रखेंगे, जब स्टमक बोलते हैं तो स्टमक में केवल स्टमक आता है, इंटेस्टाइन नहीं बात करते हैं, राइट। तो स्टमक क्या होता है, स्टमक जब भी आप कुछ खाते हैं तो स्टमक का अपना एक नेचर होता है, आपके जैसे ही आपने फूड इंटेक किया तुरंत वो एसिड रिलीज करना शुरू कर देता है। एंड वाई एसिड इज रिलीज, वाई एसिड इज रिलीज, एसिड इज रिलीज सो एज टू डिजोल्व और सो एज टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। सो एंड वाई इट इज so as to digest the protein there has to be secretion of enzymes. Which enzymes? Protein digesting enzymes. So as to digest the protein there is secretion of HCl to activate those enzyme, to activate the enzyme that are going to digest protein, right? तो आपके पेट में हमेशा HCl सिक्रीशन होता रहता है और एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स हो जाता है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो एक पर्टिकुलर टाइम में डाइजेशन होता रहता है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि हर बार हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, क्योंकि आपके पेट में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि भूख लगने पर HCl तुरंत रिलीज करना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पेट में कुछ नहीं होगा तो HCl कंटेंट तो बढ़ जाएगा, और अगर HCl कंटेंट बढ़ जाएगा तो वो वेपर फॉर्म में निकलेगा। तो हमें क्या होता है, वो वेपर बहुत तेज़ी से निकलते हैं, तो वो हमें कहाँ तक फील होते हैं, हमें चेस्ट तक फील होते हैं। तो हमें क्या लगता है, वो एसिडिटी जैसी फील होती है, कहते हैं ना एसिड ऊपर तक आ रहा है। तो बेसिकली एसिड का मतलब होता है वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चाहता है, और अगर आपके पेट में आपके स्टमक में फूड नहीं गया तो आपके स्टमक वॉल को ही प्रोटीन समझकर डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। दैट इज वाई यू फील एसिडिटी। you will learn about properties and uses of bases. At the end of this lesson, you will be able to define a base, explain the physical and chemical properties of bases, explain how indicators help to identify a base, and list the uses of bases. Tell me more about a base. Any substance that can produce hydroxide ions when dissolved in water is known as a base. करेक्ट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पानी में डिज़ोल्व करने के बाद वो OH ग्रुप्स निकालने शुरू कर दे। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, आपने सपोज करो कोई सब्सटेंस है A, आपने इसको पानी में डिज़ोल्व किया, तो कैसे ये आप सिंबलाइज कैसे करते हो H2 पानी में, सब्सटेंस A को पानी में डिज़ोल्व किया तो सिंबलाइज कैसे करोगे, A+H2O दैट गिव्स हाइड्रोक्सिलाइन। मीन्स कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जिसको पानी में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोक्सिलाइन प्रोड्यूस होता तो क्या बोलेंगे, वो बेस हुआ। इज और अलग से कुछ ना कुछ आयन बन जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन बेस अगर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक कहलाया जाएगा। ठीक है। For example, sodium hydroxide, when dissolved in water, dissociates into sodium ion and hydroxide ion. How can one identify a base? Do they have any unique properties? Yes, they do. Bitter taste Bases can be identified with their physical कड़वे properties. होते हैं। For example, they are bitter to taste. But you must never taste a base, as strong bases are corrosive in nature and denature the protein. What are these colored strips of paper?
What are they used for? These colored strips of paper are called litmus paper. Bases turn the red litmus to blue. Apart from litmus paper, we can use methyl orange. On addition of methyl orange to a base, like sodium hydroxide, the orange color of methyl orange It becomes yellow. changes to yellow, and when phenolphthalein is added to sodium hydroxide, it changes to pink. It's slippery. It feels like soap. Yes. Bases feel soapy on touch. This is because they dissolve the fatty acids and oils from the skin, and it reduces the friction between your fingers as we rub them together. Due to this property, bases are used in the preparation of soaps. Note it down. What is this? Bases are good conductors of electricity in Just aqueous like acids. solution. In aqueous solution, they release ions which conduct electricity. Just like acids, bases also conduct current, right? But neutral solutions do not conduct current, right? Acids and bases both conduct electricity. To prove this, let's perform a small experiment. First, we Suppose- take 10 milliliters of sodium hydroxide solution and 10 milliliters of water in a beaker. Then, we take a cork and fix 2 carbon rods in it. Next, we connect the rods with an electric wire in series, along with a battery, switch, and a bulb. Now, we insert the setup into the beaker with sodium hydroxide. Finally, pass electricity through it. Sodium hydroxide ion We है. can observe that the bulb glows. From this, we can conclude that bases conduct electricity. तो जहां भी आयन बनेंगे वहां पे क्या हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगी. Ouch! It's hot. Of course, they liberate heat. When bases are diluted with water, they give out heat. Just like acids. Let's look at this experiment. We take 5 grams of sodium hydroxide pellets in a test tube. To this, we add 10 milliliters of water slowly by stirring. On diluting with water, some heat is released, due to which the test tube becomes warm.